is my screen visible to you? Yes, sir. Is my screen visible? Can Yes, sir. somebody comment, please? Yes, sir. Okay. Okay, we start our today's lecture, and that is this is our lecture number 10.1, and this is we are in week number 10. In fact, and week number 9 was of the Eid, so we did not study anything in that week. So we hope that we will be able to cover up all our course, which we have not been able to cover in the Eid week. But I hope that we will be able to cover all our topics of this subject and in due course of time. All right, so we are going to talk about Jacobian today, and Jacobian is something which is going to deal with the velocities. This will be the actually the linear and angular velocities of the end effector. So what we are interested in while we are talking about Jacobian, already. So in fact, Jacobian is a matrix. In fact, so if you have studied linear algebra, so you must have come across the terminology Jacobian matrix. Jacobian matrix, and probably you must have learned how to calculate Jacobian matrix also. And if you have not come across this terminology, so you need not to worry. During the course of this lecture, you will be able to find out the Jacobian matrix while we are dealing with the linear and angular velocities of an end effector of the robot. So while we are dealing with the with robotics, so probably we will be just calling it a Jacobian. So while we are talking about robotics, so um, we start calling this as a Jacobian. So we do not add matrix with it, but we know that it's a matrix. So जी यहाँ तक ठीक है कोई linear algebra की में Jacobian matrix, did you ever come across this kind of terminology? Yes sir, लेकिन याद नहीं है वो सही. Okay, so Jacobian, the term Jacobian is not Greek to you. So if you don't remember that what was that, so no problem. During the course of this lecture, you will be able to find out that how a Jacobian matrix is calculated as far as robotics is concerned. So in the classical terms, हम उस तरह से linear algebra जो है वो नहीं पढ़ रहे होंगे, but we will be calculating the Jacobian. So let us just have a little background of this. So Jacobian matrix is used. So we will use Jacobian to find out the linear and angular velocity of joints. So in fact, while we are able to find out the linear and angular velocity of the joints, so as a whole, I would say that we will be able to calculate the velocities of end effector. So
what we are going to talk about today is that we have been talking about the position and orientation of the end effector while we were dealing with the robotics, especially when were talking about the forward kinematics and inverse kinematics. So we have been talking about the position and orientation of the end effector. So today what we are going to do is that we will be calculating the velocities, which are linear and angular velocities of the end effector, which are caused by the movement or by the rotation of different joint variables. So we know that we have two types of joints which we use in robotics, that are the revolute joint and prismatic joint. So we will deal with both of these type of joints in today's lecture to calculate the Jacobian. So let us introduce a terminology here, which is let me just, this is called chi, and chi would be the velocities. So let me just write down here. Chi would be a matrix or a vector which will have the velocities. Okay, and the velocities which will include the angular and linear velocity. So if I write down chi as a vector, so it is going to have two components. One is the linear velocity of a joint n, which can be an end effector with respect to the zero frame or the base frame. So we will have one component of this chi matrix as the velocity. These are the linear velocity of a joint which is nth joint with respect to the base, and it will have another component, angular velocity of nth joint with respect to the base or zero frame. So this vector chi, or this matrix chi, is going to give us these the velocities. So where what we have here, I will just write it down. So where n are the number of joints, n is the number of joint, or number of let's not call it number of joints. In fact, this should be, and we should call it the end effector frame. So this is actually the end effector frame, and O or 0 is the base frame. So we are actually calculating the end effector velocity, both type of velocities, linear velocity and angular velocity, with respect to the base frame. So let me just draw a manipulator here. So let us see that if we have a manipulator with us, which is a single link manipulator, and it is single link manipulator which is fixed at the base. So let me just try to make it look like a link. Okay, I think that is a little better now. So let us now attach the frames as we have already been doing. So this is actually this is x0 and this is y0, and if I attach a frame here, so this will be x1 and this will be y1, and you know that we have an angle theta which is here. So this is angle theta 1, or maybe theta, whatever name we give. So this is an angle theta. Let us call it angle theta, not as theta 1 now.
Okay, and second is that we have the base, that we have the um, um, uh, we have 0.01. Let me just write it down. We have 0.01, which is the origin of frame 1, and we have 0.00, which is the origin of frame 0. All right. Now, how we just going back a little and considering the um, course of dynamics which you have studied. So we know that the linear velocity of 0.01 can be given by a formula. Do you remember something about this? That if I ask you to give me the linear velocity v of O1, and if I have uh, this dimension as r, so what will be the linear velocity of 0.01? G, can somebody give me a hint? जी, कुछ याद आया किसी को कि अगर मैं लीनियर वेलोसिटी लेना चाहूं इस पॉइंट O1 की, so what equation I will have for the linear velocity of point O1? जी, am I audible? Um, I'm sorry, I do not know if I am still. Am I audible to you? Yes, sir. Okay, okay. I'm sorry. I thought that since I did not get any response, so I thought that probably I'm not audible to you. Okay, so can somebody comment on this? That what would be the linear velocity of point O1 if we have the length of the arm, the length of the link as r? Okay, so it will be given by the formula omega cross r. Let me just write it down. So this will be omega cross r, where r will also be a vector and omega will also be a vector. And what will omega be? Omega will be the rate of change of theta. So omega is actually the rate of change of theta, which is given by theta dot. Okay, so the v is actually the linear velocity of 0.01, which is the origin of frame x of frame 1. So we are now going to get the linear velocity with the help of omega, which is theta dot, for any frame with respect to its previous frame. So now this 0.01 or frame 1 will not only have a velocity which is linear, but also will have omega, with which it is rotating about its previous axis z. So z0 के around जो x1 या frame 1 rotate कर रहा है, actually that will be the angular velocity of this frame 1. So I repeat, so frame 1 will have two types of velocities. One, it is rotating around z1, and you know that the z1 is, it is rotating about z0, and you know that z0 is coming out of this slide from point O0. So this frame 1 is not only rotating about this, but it will also have a linear velocity with respect to its previous frame, which is frame 0. So this is what we are going to talk about today. So since we are dealing with 3 dimensions, so let me just put a line here.
So since we are dealing with the 3 dimensions, so it means that our chi vector, let me just write it down here again. So chi vector, which we had mentioned that it is going to have 2 components, which will be the linear velocity component of end effector with respect to the base frame, and the angular velocity component uh, um, of the end effector with respect to the base. So since we are dealing with the 3 dimensions, so actually the linear velocity, just please pay attention to what I'm saying, is that we are going to now talk about the velocity, the linear velocity in 3 dimensions. So since if we have a Cartesian coordinate system, or if we have a Cartesian robot, so in fact that robot end effector is going to have its linear velocity in 3 dimensions, which is x, y, z. So I can write them down like this. So let me just put it here. So this part v, which is the linear velocity, and can we write down the change in x direction, which is again the end effector n with respect to 0. Similarly, y dot n with respect to 0, and then change in z direction of the end effector with respect to 0. So these 3 terms, these give you the linear velocities. Okay. So now let us talk about the angular velocity. So the angular velocity will be the rotation of the end effector about x, y, and z. So that can be given by these terms. So omega x n with respect to 0, then omega y n with respect to 0, and then omega z n with respect to 0. So in fact, this will be a 6 by 1 matrix, which is going to give us the velocities of the end effector with respect to base, and each linear velocity will have 3 components, and also the angular velocity will have 3 components. So this will become a 6 row and 1 column matrix. Okay, let me now introduce one more term here, which is called Q. And let me just introduce it as Q dot. So Q is a vector which in general it will be called as joint variables. Okay, so Q will be a vector which will generally be the joint variables. And you know that we have already discussed that what are the joint variables. So in case of a revolute joint, the joint variable will be theta, and in case of a prismatic joint, the joint variable will be called as d, which is actually the movement of the prismatic joint. So if I write down this Q dot matrix, so that will be actually theta 1 dot, theta 2 dot, up to theta dot g. Is there any question? Okay, if there is no question, so this will be actually, so n will be the number of joints. So if we have all the n joints as a revolute joint, so this vector or this Q dot will look something like this. So if we have 6 revolute joints, so this is for n, sorry, not 6, this is for n revolute joints. This is for n revolute joints. N into revolute joints. So if we have 6 number of joints, so theta 1 will, Q dot will vary from theta 1 to theta n. Okay.
So now I'm introducing one more thing here, that if we have the third joint, let's see, if we have three joints, let's see, we have a three joint manipulator. Oops. Let's see if we have a 3 into joint manipulator whose third joint is prismatic. So this will be actually RRP manipulator. So how would this Q dot look like to us? That will be theta 1 dot, theta 2 dot, and D3 dot. So this is how the Q dot will look like. Okay, so now we have introduced actually two terms. One is chi, which gives us a vector which tells us about the linear and angular velocities of end effector with respect to base frame. And we have also introduced the term q dot, which gives us the velocities, the angular velocities of the joints. Okay, so uh, let me now make an equation for you which will actually going to give us the joint variables, the velocities of linear and angular velocities in terms of joint variables. So let me just find out chi. I am introducing a matrix here, Jacobian, which is J, and this is Q. Okay. So now, अब बड़े गौर से आपने मेरी बात सुननी. If we have Q dot as a matrix, is a vector which gives us the joint variables, so multiplying that with the Jacobian matrix is going to give us the angular and linear velocities of the joint. I repeat. So if we are given the angular velocities or the joint variables in terms of Q dot, so multiplying this by a Jacobian matrix J, we are going to get the linear and angular velocities of the joint. So this is what we are interested in, to find out chi. So given this, if we are able to find out the Jacobian, so we will be able to find out the linear velocity and angular velocities of the joints. So this is what we are going to do today. ठीक है? अच्छा. Let me just use this space and write down something else here. So let me just use this space. So what we will be looking at, so a Jacobian matrix J will have two parts, a Jacobian of linear velocity and a Jacobian of angular velocity. So ये जो Jacobian matrix है J, जो मैं find out करना चाह रहा हूँ, so this will have two components, a Jacobian for linear velocity and a Jacobian for angular velocity. Okay, so let me just take another color and write it down here. So this is the
linear velocity Jacobian part. So this is linear velocity Jacobian part, and this will have three rows, 3 into, sorry, this will have 3 rows because 3 dimension की हम बात कर रहे हैं. And this is angular velocity Jacobian part. This is angular velocity Jacobian part, and again it will have 3 into rows. और इसके कॉलम्स किस पे डिपेंड करेंगे? Its column will depend on the number of joints, n. So its column will depend on n number of joints. So the size of Jacobian J would be equal to 6 cross n, where n are the number of joints. So what we are interested to find out is a Jacobian matrix J, which is going to give us the angular and linear velocity of the joints while we are given the joint variables q dot. ओके, अब मुझे बताइए यहां तक कोई आपको ऐसी चीज हो जो समझ ना आई हो. If it is clear, so then we will move forward. Somebody to please respond that whatever we have talked about until here is understood. जी, कोई respond करेगा please? Yes, sir. Okay, so if जी, it's sir. okay, जी, okay, that's great. जी. So if it's okay until here, so I'll just give you a summary now, just for the sake of probably the repetition, that what we are interested in to find out a Jacobian matrix J, which have 2 parts. One is the Jacobian part of the linear velocity and the Jacobian part of the angular velocity. So while we are able to find out the Jacobian J for any manipulator, so if we are given the joint variables in the form of q dot, so multiplying it by Jacobian, we can find out the linear and angular velocities of the joints. Okay, so this was the summary. So let us now move on to calculation of Jacobian. So this is a spherical manipulator which has two revolute and one prismatic joint with an end effector at at frame 3. So this is actually an RRP manipulator. Okay. अच्छा, ये जो मैंने आपको ये जो matrices आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, these are actually the transformation matrix which we have already talked about. ये transformation matrices हैं which are being calculated or which are being generated with the help of DH table. So we are not going to go into the details of this, that how these have been calculated. So these are just written here for you to know that we would be using these matrices to find out the Jacobian matrix for calculating the linear and angular velocity of the joints. So let me just first since we are going to talk about the angular velocity of the Jacobian part. So we are going to talk about the angular velocity of the Jacobian part. We are going to talk about angular velocity of
Jacobian. And in fact we are interested to find out JW. ठीक है, जो हमने अभी पिछली स्लाइड पे देखा था कि JW is the part of the Jacobian matrix which deals with the angular velocity. अच्छा, ओके, अब एंगुलर वेलोसिटी हमने किसकी निकालनी है? दो तरह के जॉइंट्स हैं हमारे पास. वी हैव टू टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. वी हैव रेवोल्यूट जॉइंट एंड वी हैव दिस prismatic joint. So let me first talk about the prismatic joint. So I'm going to talk about the prismatic joint first. Okay. Now, since we are talking about the prismatic joint, so there is no rotation of the joint. So let me just write it down here. So there is no rotation of joint. So एक तो ये चीज हो गई. So जब when there is no rotation, so अच्छा, अब आपको मैंने ये बताया था कि ये जो JW है, this will have क्या कहना चाहिए कि this is going to have 3 rows and number of joints जो कि n number of joints के बराबर होगा. ठीक है. So let us see that if we have अच्छा, अब ये मैं जो इसके साथ आपको ये यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ वो मैं सिर्फ अभी प्रिज्मेटिक जॉइंट की बात करने लगा. ठीक है. सो JW में आपके पास 3 रोज होंगी. ठीक है. और आपके पास n नंबर ऑफ जॉइंट्स जो के हैं उनके कॉलम्स होंगे. सो लेट्स सी, अगर मेरे पास इफ वी हैव ऑल द प्रिज्मेटिक जॉइंट्स, मैं अभी जो बात करने लगा हूँ, सो इफ आई हैव ऑल, इफ आई have all joints as prismatic, so मेरे पास जो JW है जिसकी के 3 रोज होनी चाहिए और उसके जो कॉलम्स हैं वो n नंबर ऑफ जॉइंट्स के बराबर होने चाहिए. सो अगर मेरे पास ऑल जॉइंट्स प्रिज्मेटिक यानी कि तीनों जॉइंट्स, आई हैव 3 prismatic joints, so the JW है that is going to be all zeros. ठीक है. तमाम joints के लिए, since it's a prismatic joint, so there is no rotation involved, so there is no angular velocity of the prismatic joint. So actually each column, ये जरा गौर से सुनिएगा, each column corresponds to each joint. और ये अगर सारे मेरे पास प्रिज्मेटिक जॉइंट हैं, सो ये जॉइंट 1, जॉइंट 2 और ये जॉइंट 3 के लिए होगा. ठीक है. सो अब ये मेरी बात आपने, इसको दोबारा मैं रिपीट करने लगा हूँ, और रिपीट में क्या करने लगा हूँ कि मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ जैकोबियन मैट्रिक्स के पार्ट के लिए, जिसमें मेरे पास 3 प्रिज्मेटिक जॉइंट्स हैं, and all these 3 prismatic joints, they do not have any rotation. So इसलिए जो इसका जैकोबियन का एंगुलर वेलोसिटी का पार्ट JW होगा, these will be all zeros. ठीक है. इसमें कोई शक? जी, अगर इसमें कोई काइंडली कोई क्यूरी रह रही है तो प्लीज मुझे जरूर बताइए, क्योंकि फिर मैंने आगे अभी इसको एंगुलर वेलोसिटी की ही मैं बात करूंगा, बट अब मैं रेवोल्यूट जॉइंट की बात करने लगूंगा. ओके. सो अगर यहाँ तक कोई इसमें आपको शक नहीं है, सो let me just duplicate this slide. Okay. Sorry.
now I'm going to talk about the angular velocity of the Jacobian part, but now that will be about revolute joints. Now this is for revolute joint. ठीक है. अच्छा, अब मैं ये करने लगा हूँ कि फॉर रेवोल्यूट जॉइंट मैं अब ये चूंकि मेरे पास ये सामने कुछ ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस मौजूद हैं, सो मैं इनको यूटिलाइज करूँगा एंड देन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. सो हमने व्हाट वी हैव assumed during while we were talking about kinematics. So in kinematics, let me just write it down. In kinematics, we had assumed that the rotation of a revolute joint will always be about z-axis. ठीक है, ये आपको याद है ना कि हम ये कहते होते थे कि जो भी हमारा रेवोल्यूट जॉइंट है वो इट विल रोटेट अबाउट इट्स जी एक्सिस. और यहाँ भी आप देखें कि अगर आप ये देखें यहाँ पे, तो ये देखें यहाँ पे आपका ये जॉइंट वन इज रोटेटिंग अबाउट ये z0 पे, इसी तरह ये θ2 इज रोटेटिंग अबाउट z1, तो ये आपको यहाँ नजर आ रहा है. सो यही चीज हमने यहाँ पे भी अभी हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो भी आपका रोटेशन है ऑफ एनी रेवोल्यूट जॉइंट विल बी अबाउट z एक्सिस. ओके, अच्छा, ये हम इस चीज को हम यहाँ पे क्यों लेके आ रहे हैं कि अब जब मैं जैकोबियन की बात करने लगूंगा विच इज JW. अब देखें ये एंगुलर वेलोसिटी है, ध्यान में रखिएगा. दिस इज द जैकोबियन पार्ट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी के लिए जो मेरा जैकोबियन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ. तो इसमें क्या है कि देयर इज विल बी अ रेवोल्यूशन, एक रोटेशन की मैं बात करूंगा, एंड सिंस इट इज अबाउट z, तो आई कैन राइट इट डाउन इट लाइक दिस कि rotation of I-1 joint with respect to 0, rotation of I-1 joint with respect to 0 or base frame if multiplied by this vector which is 0, 0, 1. So this is going to give me the Jacobian part of the angular velocity of the Jacobian part of the matrix. So this is actually the rotation matrix which is 3 by 3. You remember this, that this is 3 by 3 rotation matrix multiplied by 0, 0, 1. And why are we multiplying it with 0, 0, 1? Because we have assumed that the rotation of a revolute joint will always be about z axis. ठीक है. So what will this give us? This is going to give us the last column. This is going to give us the last column of the revolute, the rotation matrix. Last column of the 3 by 3 rotation matrix. ठीक हो गया. अब मैं आपको ये कैलकुलेट करके देने लगा हूं. ठीक है, मैं अभी एक एक करके इसको तीनों जॉइंट्स को यहाँ पे मैं देखूंगा और इन तीनों जॉइंट्स के मतलब के साथ हम बात करेंगे कि ये हमें किस तरह से इसका रोटेशनल जो या एंगुलर वेलोसिटी का जो जैकोबियन पार्ट है वो हमें कैसे नजर आएगा. सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हियर. सो दिस इज JW
अच्छा, अब हम सबसे पहले हम जॉइंट 1 यानी कि जहां पे हमारा आई जो है वो 1 होगा। I1 कहाँ होगा? जो मेरा ये मैट्रिक्स है, जो मेरा ये फ्रेम है, which is frame 0. So this will be actually if I is equal to 1, if I is equal to 1, तो मेरा ये जो पहला कॉलम मैं बनाने लगा हूँ, जो मैं पहला कॉलम बनाने लगा हूँ रेवोलूट जॉइंट के लिए JW का, so that will be first column में will be R0 with respect to 0 multiplied by 0, 0, 1. अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर ये बात किसी को समझ नहीं आई, तो मैं आई एम एक्चुअली राइटिंग डाउन JW फॉर दीज 3 जॉइंट्स, जो कि पहला रेवोलूट, दूसरा रेवोलूट और तीसरा प्रिज्मेटिक है। मुझे बताइए कि क्या यहाँ पे मेरे जो n है वो 1 था, इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए n is equal to 1। अब मैं सेकंड कॉलम में आ रहा हूँ, वहां जहां पे n will be equal to 2। सो सिंस ये भी एक रेवोलूट जॉइंट है, तो यहाँ पे मेरे पास रेवोल्यूशन यानी कि रेवोलूट मैट्रिक्स आएगा 1 विद रिस्पेक्ट टू 0, बिकॉज I माइनस 1 है, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और ये 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, 0, 1। सो ये मेरा सेकंड कॉलम आ जाएगा। और मेरा थर्ड कॉलम जो है वो किसके साथ मैंने देखना है? दैट आई हैव टू लुक एट द प्रिज्मेटिक जॉइंट, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट प्रिज्मेटिक जॉइंट के अंदर चूंकि कोई रेवोल्यूशन या कोई रोटेशन नहीं है, सो दिस विल बी इक्वल टू 0, 0 एंड 0। सो दिस विल बी द angular velocity Jacobian part of my matrix। अच्छा, अब मुझे बताइए कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? आप लोगों को ये बात सही से समझ आ रही है? ओके, अगर कोई आपके तरफ से रिप्लाई नहीं है तो मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि everything is well understood. So let me just now solve this. So JW will be equal to, अच्छा, now since rotation of 0 with respect to 0 with respect to itself, किसी भी फ्रेम की रोटेशन with respect to itself will be identity. So this will be an identity matrix multiplied by 0, 0, 1. Okay. Second, आप देखें, सेकंड के अंदर आप देखें तो आपके पास 1 to 0, so this is 1 to 0 का रोटेशन मैट्रिक्स आपको ये नजर आ रहा है। 1 to 0 का रोटेशन मैट्रिक्स आपको ये नजर आ रहा है। So let me put the rotation matrix here, जो कि 1 to 0 के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। So this will be actually cos theta 1, this will be cos theta 1, 0, sin theta 1, then sin theta 1, 0, minus cos theta 1, 0, 1, 0, and this will be multiplied by 0, 0, 1, and the last column is 0, 0, 0। ठीक है, और अब मैं इसको जो मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखने लगा हूँ, सो लेट मी जस्ट टेक दिस कलर। सो JW will be equal to, the first column will be equal to 0, 0, 1, 0, 0, 1. This second column, which is the multiplication of these two, so the last column will be the last column will be taken from here, या मैं इसको मल्टीप्लाई करके देख लूँ तो ये भी मुझे देखें यहाँ से नजर आएगा। सो दिस विल बी फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम द sin theta 1, second row this column will be minus cos theta 1 and 0. So this will be written as
sine theta 1 minus cos theta 1 and 0, and the last column is 0 0 0. So now this is the angular velocity Jacobian part for this manipulator, जिसके अंदर we have 2 revolute joints and 1 prismatic joint. So हमने देखा कि जो लीनियर वेलोसिटीज थी वो रेवोल्यूट जॉइंट के लिए तमाम जीरोस थी, जबकि जो एंगुलर वेलोसिटीज हैं वो रेवोल्यूट जॉइंट के लिए भी मौजूद हैं और वो मौजूद हैं और वो जो कि इसके लिए जो कि आपका लीनियर प्रिज्मेटिक जॉइंट है उसकी एंगुलर वेलोसिटीज जीरो होती हैं, ये हम पहले देख चुके हैं. So just adding one more for your experience, that if we have the third joint also as a revolute joint, I am assuming that I have the third joint also as a revolute joint. So let me just write it down. So if the third is also a revolute joint, so इसके लिए जो मेरे पास अब इक्वेशन यहाँ पे आएगी, so that will be R 2 to 0 और 0 0 1. ये मैं उस कंसिडरेशन में ले रहा हूँ कि अगर थर्ड जॉइंट यहाँ पे, तो मेरे पास थर्ड जॉइंट जो है वो प्रिज्मेटिक है. अगर ये थर्ड जॉइंट मेरे पास रेवोल्यूट होता तो ये बनना था. और जो R02 है वो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा? Let me just show you that. So R2 with respect to 0 will be equal to the multiplication of R1 with respect to 0 and R2 with respect to 1. So इससे मुझे R2 with respect to 0 मिल जाता है. ये चीज़ मैंने यहाँ पे इसलिए आपको बताई है कि हमने जब आगे एक कैलकुलेशन करनी है तो उसके अंदर ये कंडीशन या ये इक्वेशन या ये यूज़ होगा. तो इस केस के अंदर हमने क्या करना है कि हमने इन दो जो रोटेशन पार्ट्स हैं, ये जो दो रोटेशन पार्ट हैं, दिस इज रोटेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू 0, ये वाला, और दूसरा ये वाला जो पार्ट है which is rotation of 2 with respect to 1. So इन दोनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई करके and then I will be able to find out rotation of 2 with respect to 0. तो ये जब मैं उस पे पहुंचूंगा जहाँ पे मुझे तीसरा जॉइंट भी रेवोल्यूट होगा तो वहाँ पे ये कंडीशन इसके ऊपर आ जाएगी. ओके जी. सो यहाँ तक कुछ क्लैरिटी आ गई आपको कि जैकोबियन के दो पार्ट्स, एक लीनियर वेलोसिटी का पार्ट और एक अपना एंगुलर वेलोसिटी का पार्ट. सो एंगुलर वेलोसिटी के लिए मैंने दो तरह के फर्दर इसको डिवाइड कर लिया, प्रिज्मेटिक जॉइंट के लिए और रेवोल्यूट जॉइंट के लिए. तो प्रिज्मेटिक जॉइंट के लिए मैंने ये देख लिया कि प्रिज्मेटिक जॉइंट में जो एंगुलर वेलोसिटी है वो पूरे कॉलम में 0 हो जाती है. ये हमने इससे पिछली स्लाइड पे देख लिया. और रेवोल्यूट जॉइंट के लिए दिस विल हैव अ वैल्यू जो कि हमने इस स्लाइड के ऊपर कैलकुलेट कर लिया. और यहाँ पे हमने एक्चुअली अपने पिछले स्लाइड का वो वाला नॉलेज जिसमें हमें ये पता लगा था कि एक प्रिज्मेटिक जॉइंट के लिए एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 0 होगी, तो वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया इन द थर्ड कॉलम ऑफ JW. सो अब हमारे पास ये एक JW इस फॉर्म में आ गया है. ठीक है जी. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नाउ टॉक अबाउट, अभी हमने एंगुलर वेलोसिटी ऑफ जैकोबियन पार्ट की बात की है. अब हम लीनियर वेलोसिटी ऑफ जैकोबियन पार्ट की बात करेंगे. और लीनियर वेलोसिटी ऑफ जैकोबियन पार्ट में जो पहली बात हम करेंगे दैट विल बी वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फॉर प्रिज्मेटिक जॉइंट. ठीक है. जैसे लास्ट हमने वहां पे भी प्रिज्मेटिक और
रेवोल्यूट जॉइंट के लिए किया था। सो यहां भी हम प्रिज्मेटिक जॉइंट की बात करेंगे पहले। ओके, सो दिस इज फॉर द प्रिज्मेटिक जॉइंट। सो इसमें जो मेरे पास जैकोबियन है वेलोसिटी के पार्ट का फॉर एनी joint I, that is given by r I minus 1 to 0 0 0 1। ठीक है, सो यहां से हमें क्या नजर आ रहा है, अगर आप यहां पे देखें, सो आई कैन वेरी safely say that linear velocity of the link, that linear velocity of the link is same as the joint velocity. ठीक है, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द लिंक, अब मैं ये पूरे लिंक की बात कर रहा हूं, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द लिंक इज सेम एज द जॉइंट वेलोसिटी, जो अभी मैंने पिछले स्लाइड के ऊपर ये की। ठीक है, सो ये प्रिज्मेटिक जॉइंट के लिए ये इस तरह है, और ये प्रिज्मेटिक जॉइंट के आगे जो लिंक लगा हुआ है, एक्चुअली ये उसकी बात हो रही है, ये जॉइंट की बात नहीं हो रही, ये उस लिंक की बात हो रही है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट for revolute joint. Let me just take up the black color. So now for the revolute joint. So revolute joint के लिए जो मेरे पास joint velocity आएगी, joint velocity for an ith joint, for an ith link, so ये क्या होगी। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये कॉम्प्लिकेटेड किस लिए है या क्यों है कि इसके अंदर पहले तो पार्ट वही है कि जिसके अंदर मैंने रोटेशन लेनी है। सो रोटेशन ऑफ I minus 1 with respect to 0 0 0 1, and this will have a cross product with d n 0, ये क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ, माइनस डी आई माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू 0। ठीक है, अब लेट मी जस्ट टेल यू ये क्या चीज है। दिस इज द पोजीशन ऑफ द ओरिजिन, दिस इज द पोजीशन ऑफ origin of nth joint with respect to base। ठीक है, अच्छा अब ये क्या, ये मैं क्यों बीच में इसमें लेके आया कि रेवोल्यूट जॉइंट में एक तो उसने रोटेट करना है और उसने अपने प्रीवियस लिंक के साथ मूव भी करना है। एक अपने प्रीवियस लिंक के रेफरेंस से उसने अपनी पोजीशन को भी चेंज करना है। तो इसलिए ये रेवोल्यूट जॉइंट के लिए जो लीनियर वेलोसिटी है वो इस तरह से डिटरमिन की जाती है। और ये जो सेकंड इसका पार्ट है, दिस वन, दिस इज द पोजीशन of origin of the joint which is under consideration, which is under consideration, यानी कि पहला जॉइंट है, दूसरा है, तीसरा है, which is under consideration with respect to base। ठीक है, तो ये मैंने अब आपको, अगर मैं यहाँ पे समराइज करूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको समराइज करूँ तो क्या हमने अभी तक कर लिया, हमने जैकोबियन
जिसके के दो, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हियर सो दैट मैं इसको कहता हूँ कि समरी क्या है, समरी क्या है कि we had a Jacobian, we wanted to find out a Jacobian which had two components, JV जो कि लीनियर वेलोसिटी कंपोनेंट था और JW जो कि एंगुलर वेलोसिटी कंपोनेंट। सो मैंने जैकोबियन के लिए आपको लीनियर वेलोसिटी कंपोनेंट्स, किस तरह के दो जॉइंट्स, एक प्रिज्मेटिक जॉइंट के लिए भी, प्रिज्मेटिक जॉइंट के लिए भी हमने इसको डिटरमिन किया और हमने इसको रेवोल्यूट जॉइंट के लिए भी डिटरमिन किया। इसी तरह जो इसका एंगुलर वेलोसिटी कंपोनेंट था जैकोबियन का, उसको भी हमने प्रिज्मेटिक जॉइंट के लिए डिटरमिन किया और उसको हमने रेवोल्यूट जॉइंट के लिए भी डिटरमिन किया। ठीक हो गया जी? अब यहां तक जी कोई आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए, अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये कुछ समझ आ रही है? क्योंकि आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा फिर परेशान हो जाता हूं कि is everything understood or not? जी कोई रिस्पॉन्ड करेगा काइंडली? मैं थोड़ा सा जरा मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाती है जब आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स आ जाता है। जी सर। ओके, सो यहां तक कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं नजर आ रहा कि यार चीज समझ ना आ रही हो? नहीं सर। ओके चलो, दैट्स ग्रेट। सो बिफोर मैं एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके दूं टू फाइंड आउट अ जैकोबियन, लेट मी जंप ऑन टू दिस। अच्छा इसको जरा अभी आपने ये देखना है। अच्छा ये जो अभी तक हमने किया था, अभी तक हमने जो किया है ये उसकी समरी है। अब अगर आप गौर से देखें सो ये जैकोबियन है, ये जैकोबियन का लीनियर और रेवोल्यूट पार्ट है। मैं जब जैकोबियन को कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो ये लेफ्ट कॉलम में आप देखें कि ये जैकोबियन का लीनियर और ये रेवोल्यूट पार्ट है। सो इफ आई एम इंटरेस्टेड इन लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ प्रिज्मेटिक जॉइंट तो मैं ये वाला यूज करूंगा फॉर्मूला। ये हमने अभी पीछे ड्राइव किए हैं ये सारे, तो मैं ये टेबल की फॉर्म में आपको दिखाना चाह रहा हूं कि अगर मैंने लीनियर वेलोसिटी निकालनी है ऑफ अ प्रिज्मेटिक जॉइंट, यानी कि मैं ये जैकोबियन निकालने की बात कर रहा हूं, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। ये आपको यहां नजर आ रहा है। इसी तरह अगर मैंने लीनियर वेलोसिटी एक रेवोल्यूट जॉइंट की निकालनी है तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैंने रेवोल्यूट पार्ट जैकोबियन का निकालना है फॉर अ प्रिज्मेटिक जॉइंट जो कि 0 है, ये भी हम देख चुके हैं पहले। और इसी तरह रेवोल्यूट पार्ट फॉर अ रेवोल्यूट जॉइंट वो इस तरह से निकला। और यहां पे हमने ये देखा था कि ये दोनों आपस में सेम, ये हमने जिक्र किया। सो इसमें जो कैलकुलेशन के हिसाब से, आई रिपीट, कैलकुलेशन के हिसाब से जो डिफिकल्ट है निकालना, डिफिकल्ट तो नहीं कहना चाहिए, विच इज मोर कम्बरसम, वो ये वाला पार्ट।
बाकी ये सारे पार्ट सिंपल हैं और ये आप जब भी आप ये कैलकुलेशन करते हैं तो यू विल सी कि ये बड़े आराम से आपके सामने ये पार्ट निकल आएंगे। सो एक्चुअली लीनियर वेलोसिटी ऑफ रेवोल्यूट जॉइंट, ये सबसे मुश्किल या सबसे कम्बरसम चीज जो है वो हमारे इसके अंदर यही है। ठीक है जी। सो लेट मी नाउ गो बैक और ओके अब मैं एक स्फेरिकल मैनिपुलेटर, अब मैं एक एग्जांपल सॉल्व करने लगा हूँ आपके सामने और मैं एक स्फेरिकल मैनिपुलेटर का मैं ये जैकोबियन जो है वो आपके सामने अभी कैलकुलेट करूँगा। ठीक है। सो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस यू, ये मतलब ये हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस हैं। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस हैं वी नो दीज ऑलरेडी कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिस है ये किस टेबल से बनते हैं। दीज आर कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ डीएच टेबल। सो ये वी आर फेमिलियर विद दिस, इसमें कोई चीज़ नई नहीं है। वी नो, जस्ट ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है दिस इज द रोटेशन पार्ट एंड दिस इज द पोजीशन या ट्रांसलेशन कहते हैं हम इसको, और हम एक पूरे मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्मेशन कह देते हैं। और सिंस इसके नीचे हम ये एक रो ऐड करते हैं तो दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ये सब मैं एक रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है। एक चीज़ जो इसके अंदर मैं आपको नई बताने लगा हूँ वो क्या है, वो ये है कि अगर इफ आई वांट टू फाइंड आउट द पोजीशन, if I want to find out the position, let's see, position को मैं D से डिनोट करता हूँ, position of the third joint with respect to the 0th frame, यानी कि end factor with respect to the base, तो ये मैं सिर्फ इन तीन जो ये कॉलम्स हैं इनको ऐड करके ये मैं ले सकता हूँ। सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन कि डी, मैं रिवर्स ऑर्डर में जा रहा हूँ, आप इसको फॉरवर्ड ऑर्डर में भी लिख सकते हैं कि D3 to 2 प्लस D2 to 1 प्लस D1 to 0। और ये D3 to 1 ये कौन से हैं, दिस इज D, इसको मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको 0 0 A3 plus 3 प्लस A2 cos theta 2, A2 sin theta 2, 0 plus 0 0 A1। ठीक है। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है ये मैं इन तीन वेक्टर्स को ऐड करके, लेट अस नॉट राइट इट लाइक दिस, ये तीनों वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, सो लेट अस राइट देम लाइक दिस। सो ये जो वेक्टर मेरे पास D3 to 0, अच्छा ये मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि आपने उस टेबल में देखा था कि हमने ये वाला वेक्टर या ये वाला हमने यूज करना होगा, तो इसलिए मैं ये इसको यहाँ पे आपके सामने लिखा। ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको एक रेपिटेशन करा दी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के बारे में, जिसके अंदर एक रोटेशन पार्ट है और एक ट्रांसलेशन पार्ट है, एंड देन मैंने एक आपको एंड फैक्टर का ट्रांसलेशन या पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बेस 3 to 0 जिसको मैंने कहा वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी। अब इन चीज़ों को हमने यूज़ करना है इन दी नेक्स्ट उसके अंदर जो हम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे आपको ये कैलकुलेशन जो है वो और क्लियर होती जाएगी। ठीक है। सो मैं इसको जरा मिटा देता हूँ ताकि ये वाला जो है इसको मैं बता देता हूँ। Okay, now let's solve for the angular velocity component first. Angular velocity में क्या था, हमारे पास JW था
ओके, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। वी हैड JW जो कि एंगुलर वेलोसिटी पार्ट में था, और इसमें हमने कहा था कि इट विल हैव 3 कॉलम्स एंड 3 रोज। वाई 3 कॉलम्स, वाई 3 रोज, वो तो 3 डायमेंशन की हैं, और वाई 3 कॉलम्स बिकॉज द कॉलम्स जो हैं वो हमारे will be equal to the number of joints, and since in the spherical manipulator we have 3 number of joints, so the JW है इसका जो size होगा, that will be actually a 3 cross 3 matrix. This will be a 3 cross 3 matrix, जबकि जिसमें के पहला 3 जो है, जो ये वाला है, ये 3 डायमेंशन का है, और ये 3 जो है ये नंबर ऑफ जॉइंट्स का है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने वो जो टेबल बनाया था उसी के मुताबिक मैं यहाँ पे बातचीत करने लगा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और टर्म इंट्रोड्यूस करने लगा हूँ, क्योंकि आपने देखा था कि हम हर जगह पे एक 0 0 1 मैट्रिक्स के साथ हम रोटेशन मैट्रिक्स को अब जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इसको मैं यहाँ पे k का नाम देने लगा हूँ, सो दैट यहाँ पे जब मैं लिखूँ तो आपको पता हो कि व्हाट इज k। सो JW पहले जॉइंट के लिए जिसमें कि I इज इक्वल टू 1 था, सो दिस विल बी R00 मल्टीप्लाइड बाई k। ये पहला जॉइंट है। दूसरे जॉइंट के लिए क्या होगा, R120 मल्टीप्लाइड बाई k, ये दूसरा जॉइंट हो गया। और तीसरा जॉइंट हमें पता है प्रिज्मेटिक है, और हमें पता है कि JW यानी कि उसका जो प्रिज्मेटिक का जो रोटेशनल कंपोनेंट है वो 0 होता है। सो 0 0 एंड 0। सो ये मेरे पास JW है। अच्छा, अब ये ज़हन में रखिएगा कि ये मेरे पास R और P, सो दिस इज R P मैनिपुलेटर। ठीक है। नाउ let me calculate R00 multiplied by k. So R00 क्या है, rotation of 0 frame with respect to 0, so that will be equal to identity. That will be equal to identity multiplied by k, which is 0 0 1. So this will be equal to 0 0 1. तो ये जो पहला कॉलम है मेरे JW का वो ये आ गया। ठीक है। सो लेट मी जस्ट राइट डाउन, मैं जरा इसको यहाँ नीचे अलग से बनाता हूँ। सो मेरा जो JW था उसका जो पहला कॉलम है वो ये आ गया, विच इज 0 0 एंड 1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम क्या है जी? सेकेंड कॉलम ये था R120 multiplied by k. So this is R120 multiplied by k. So R120 क्या है? R120 ये गिवन है हमें, ये देखिए ये। So let me just write it down. So this is cos theta 1 0, sin theta 1, then sin theta 1 0, minus cos theta 1 0 1 and 0, and this is multiplied with k, which is 0 0 1, and since हमें पता है इसको मल्टीप्लाई करके we would be able to get only the last column of this, so this will be equal to sin theta 1 minus cos theta 1 into 0. So this is the second column of my JW. So let me just write it down here. So this will be sin theta 1 minus cos theta 1 and 0. Now come on to the last, और लास्ट में जो है मेरे पास वो मुझे पता है कि लास्ट हम ऑलरेडी वी नो इट वेल दैट इट इज इक्वल टू 0 0 and 0. So this is the last column of my JW, which is given by 0 0 and 0. So I have been able to calculate the JW, the angular velocity component of my Jacobian, with the help of all this. ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ तक क्लैरिटी है?
अगर यहाँ तक क्लैरिटी है तो मैं आगे चलूंगा। तो ये चीज वही है जो हमने पहले की हुई है। अब मैं अगले वाले पॉइंट पे जाना चाह रहा हूँ, जहां पे नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व फॉर द लीनियर वेलोसिटी कंपोनेंट। ठीक है, और वो लीनियर वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगा, वो जे वी होगा। सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हियर। ओके, सो जे वी, अब पहले जॉइंट की बारी आ गई। पहले जॉइंट के लिए जे वी क्या होगा, दिस विल बी आर। अब ये हम रेवोल्यूट जॉइंट की लीनियर वेलोसिटी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। रेवोल्यूट जॉइंट के लीनियर वेलोसिटी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए मेरे पास आर 0 0 0 0 0 0 1 and it will have a cross product. I repeat, it will have a cross product of d 3 to 0 minus d 0 to 0. सो ये देखिए, ये इसका पहला कॉलम आया है, ये जेवी का पहला कॉलम है ये। अब लेट अस सी कि इसका दूसरा कॉलम क्या होगा। अगेन रेवोल्यूट जॉइंट है दूसरा भी, तो ठीक है, इसके लिए भी यही फॉर्मूला यूज होगा। आर अब 1 to 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 0 0 1 जो कि हमारा के था, और इसका अगेन क्रॉस प्रोडक्ट। अब किसके साथ, एक तो वही d 3 to 0 माइनस यहाँ d 1 to 0। ये दूसरा कंपोनेंट हो गया। तीसरा कंपोनेंट क्या था लीनियर वेलोसिटी का, तीसरा कंपोनेंट जो कि प्रिज्मेटिक जॉइंट के लिए है, सो दैट विल बी गिवन बाय r 2 to 0 into 0 0 1। तो सिंस ये प्रिज्मेटिक जॉइंट है, तो इसलिए इसके अंदर वो क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो पोजीशन है वो यहाँ पे नहीं आ रही है। और ये मेरा रेवोल्यूट जॉइंट था, दिस वाज माय रेवोल्यूट जॉइंट, दिस वाज अगेन माय रेवोल्यूट जॉइंट एंड दिस वाज माय प्रिज्मेटिक जॉइंट। अब मैं इनको एक एक करके सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। सो लेट अस फर्स्ट R1 के लिए अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे ये निकालना है, तो मैं यहाँ पे जस्ट लेट मी राइट इट डाउन के R0 0 0 0 1 क्रॉस D3 to 0 माइनस D0 to 0, ये किसके बराबर होगा। R0 to 0 इज आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को जब मैं 0 0 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये 0 0 1 ही आ जाएगा। और अब इसका मैंने क्रॉस प्रोडक्ट करना, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, सबसे पहले D3 to 0, ठीक है, और D3 to 0 क्या है जी, D3 to 0 क्या था, हमने ये बात की थी शुरू में कि हम इन तमाम को ऐड कर लेंगे। ये जो लास्ट कॉलम्स हैं ये वाले, वी विल ऐड देम टुगेदर, सो दिस विल बिकम D3 to 0। ये हमने बात पहले की थी, ठीक है। सो इफ आई ऐड देम टुगेदर, सो मेरा जो पहला बनेगा कॉलम, जो पहले बनेगा 0 प्लस A2 cos थीटा 2 प्लस 0, सो दिस विल बी A2 cos थीटा 2। सेकेंड में 0 प्लस A2 sin थीटा 2 प्लस 0, सो दिस विल बी A2 sin थीटा 2। और तीसरे A1 प्लस A3 प्लस 3, so this will be A1 plus A3 plus 3। ये मेरे पास बन जाता है, ठीक है।
अब इनका मैंने, अच्छा अब दूसरा क्या था, d 0 to 0, सो डिस्टेंस इन दोनों का आपस में जो है वो 0 है, 0 का 0 से डिस्टेंस इज 0, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे वो माइनस करके, एक्चुअली मुझे इसके साथ 0 0 0 लिखना चाहिए था, लेकिन वो चूंकि 0 एग्जिस्ट, वो उसका वो लिखने का, तो मैंने आपको ये पूरा लिख के यहाँ पे दे दिया। अब नाउ दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट, सो दिस इम्प्लाइज, अच्छा ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये निकालने के कई तरीके हैं, ये यू कैन सी, इसको आप देख सकते हैं कि इस तरह के वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट लेना है वो कैसे है। मैं अभी वो आपको वो तरीका नहीं बता रहा, सिर्फ मैं यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लिख देता हूँ, एंड देन आप इसको खुद घर पे जाके देखिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिया जा सकता है। सो इसका जो आंसर है दैट विल बी माइनस a2 sin theta 2, a2 sin theta 2, a2 cos theta 2 and 0। ये इसको जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ माय जेवी। सो लेट मी राइट डाउन, मैं इसको अगली स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे मैं इसको लिखूंगा। सो यहाँ पे मैं जरा इसको लिखता हूँ जाके। सो दिस इज माय जेवी, और इसका जो पहला कॉलम है वो मैं वहाँ से जो लेके आया हूँ वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, माइनस a2 sin theta 2, a2 cos theta, a2 cos theta 2 and 0। So this is the first column जो कि मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया है, ये वाला, ठीक है। अब मैं दूसरे उसकी बात करता हूँ। दूसरा क्या है जी, मैं ज़रा इसके लिए कलर डिफरेंट ले लेता हूँ ताकि ये हमें अलग से दिखता रहे। ओके, दूसरा है मेरे पास ये वाला। सो दिस इज R0 to 1, 0 0 1 multiplied by D3 to 0, sorry, cross product, not multiplied, and D1 to 0, cross product. This will be equal to what? So मेरे पास सबसे पहले 1 to 0, ये सॉरी ये वाला 1 to 0 का R, ये R1 to 0. So this is cos theta 1 cos theta 1 0 sin theta 1, then sin theta 1 0 minus cos theta 1, then 0 1 and 0, ठीक है। This is to be multiplied with 0 0 and 1, and then इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमने ये लेना है, और मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको जो D3 और D ये वाला मैं डायरेक्टली लिखने लगूँ यहाँ पे। D3 क्या था, A2 cos theta 2, A2 cos theta 2 minus 0, ठीक है। ये कौन सा है, 1 to 0, ये वाला, ये। So A2 cos theta 2 minus 0, then A2 sin theta 2, A2 sin theta 2 minus 0, और A1 plus A3 plus 3 minus ये वाला A1, ठीक है। और ये किसके बराबर आएगा, यहां से मेरे पास ये कॉलम निकल आएगा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से। सो दिस विल बी sin theta 1
माइनस कॉस थीटा 1 0 और इसका क्रॉस प्रोडक्ट विद a2 cos theta 2, a2 cos theta 2, a2 sin theta 2 and a3 plus 3। और इनका जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं तो मेरे पास इनका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा माइनस कॉस थीटा 1 इंटू a3 प्लस 3 माइनस साइन थीटा 1 इंटू a3 प्लस 3 और आखिर में साइन थीटा 1 a2 साइन थीटा 2 प्लस cos theta 1 a2 cos theta 2। Okay, now this is the second column। अब इस सेकेंड कॉलम को भी मैं अगली स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, and I'm going to write it down here, the second column which is minus cos theta 1 a3 plus 3 minus sin theta 1 a3 plus 3 then sin theta 1 a2 sin theta 2 plus cos theta 1 a2 cos theta 2। ये सेकंड कॉलम मेरे पास है, ठीक हो गया। Now let us talk about the third portion, ये वाला। इसके लिए मैं let me take another color। So now I am going to talk about this, ठीक है। So what I am interested in, I am interested to find out, let me just write it down here। So R2 to 0 multiplied by 0 0 1। अच्छा, हमें पता है कि R2 to 0 किसके बराबर है? R2 to 0 is equal to R1 to 0, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये उसी की रेपिटेशन है, into R2 to 1 and this has to be multiplied by 0 0 1, ठीक है। Now let me write down these। R1 to 0 क्या है? This is R1 to 0, हमने ये पहले भी बात की थी, मैं ये दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। This is R1 to 0 and this is R2 to 1, ठीक है। So let me just write it down here। So इन दोनों को मैं R को लिख, अच्छा चलो मैं इनकी मल्टीप्लाई करके ही इनका इकट्ठा लिख देता हूँ। So I am writing down the multiplication of these two and this will come out to be minus cos theta 1 sin theta 2 minus cos theta 1 sin theta 2 sin theta 1 then cos theta 1 cos theta 2। This is the multiplication of these two, ये ज़हन में रखिएगा। माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 minus cos theta 1, this is sin theta 1 cos theta 2, then cos theta 2 0 and sin theta 2, और इसको मैंने अगेन मल्टीप्लाई किससे करना है, वही वाला 0 0 and 1। तो आई एम एक्चुअली फाइंडिंग आउट, मैं टेकिंग आउट द लास्ट कॉलम and this will be equal to cos theta 1 cos theta 2 sin theta 1 cos theta 2 and sin theta 2। So I am going to take this now to my third column on the next slide, which will be given by cos theta 1 cos theta 2
sin theta 1 cos theta 2 and sin theta। सो ये अब देखिए कि मैंने ये जो इसका वेलोसिटी कंपोनेंट था या वेलोसिटी जैकोबियन था वो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ये पूरे प्रोसेस में से गुजर गया। और इससे पहले मैं ये जो इसका W वाला कंपोनेंट था, JW वाला कंपोनेंट, वो भी यहाँ निकाल चुका था, ये वाला, दिस वाला। सो अब मैंने क्या करना है कि मैंने इन दोनों को कंबाइन कर देना है और कंबाइन करके मेरे पास जैकोबियन निकल आएगा। सो कंबाइनिंग दीज टू वुड मीन दैट आई नो दैट जैकोबियन वुड बी इक्वल टू JV and JW। सो जैकोबियन वुड बी इक्वल टू, ऊपर JV नीचे JW को रख देंगे। सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू। So this will be minus A2 sin theta 2 minus cos theta 1 into A3 plus 3 cos theta 1 cos theta 2। This is the first row। Second row क्या है? A2 cos theta 2, ये मैं सिर्फ जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है मैं यहाँ ला के इसको एक दूसरे के ऊपर नीचे रखा हूँ, माइनस sin theta 1 into A3 plus 3 and then sin theta 1 cos theta 2, 0 sin theta 1 A2 sin theta 2 plus cos theta 1 A2 cos theta 2, A2 cos theta 2 and this is sin theta 2। और नीचे अब इसके W वाला कंपोनेंट जो कि था 0 sin theta 1 0 0 minus cos theta 1 0 1 0 1। So this is the Jacobian I have calculated for a spherical manipulator। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे बताइए, ये बोरिंग तो काफी ज्यादा हो गया बिकॉज इट हैज टू मच मैथ, but I request you to go back home when you open up your books in the evening. So please do this, all these mathematics, all these matrix multiplication with your own hand, so that this becomes clear to you that how a Jacobian of a spherical manipulator can be calculated. What we are going to do tomorrow is that we are going to solve two examples of calculation of Jacobian. But I am not going to write them down on the slide for you. I have done it myself, so I am just going to put the answers for you tomorrow। ये मैं कल करेंगे हम, but definitely हम उसके एक स्टेप को जरूर डिस्कस करेंगे and then we will find out, वो दो एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। तो ये जैकोबियन को सॉल्व करने में या जैकोबियन को बनाने में हमें उसमें हेल्प मिलेगी। अब जब ये जैकोबियन मेरे पास आ गया, सो फॉर अ स्फेरिकल मैनिपुलेटर, if I am given q dot, which are the joint variables, so I will multiply it with j and I am going to find out the linear and angular velocities of each joint in 3 dimensions। ठीक है जी। So अब मुझे बताइए जी, यहाँ तक it was laborious, I know it was probably boring also, but you have to do it by yourself for once when you are practicing it at home। So this finding out the Jacobian for any kind of matrix, for any kind of manipulator would become easy। तो कल जब हम दो एग्जांपल्स और सॉल्व करेंगे, so that will reinforce your knowledge about the Jacobian, calculation of Jacobian। जी मुझे बताइए, यहाँ पे कोई क्वेश्चन?
जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? काइंडली इफ somebody wants to ask something. ओके, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग घर जब वापस जाएं शाम में इसको दोबारा देखें, तो प्लीज़ ये साथ में लेक्चर को भी साथ रखें और इसको एक दफ़ा सॉल्व कर लें. सो थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट हेयरिंग. सो